Hi guys, welcome to our channel Maiden Hunters. We're here today to do a recap of the Super Sunday. Two nice games, two classic games, one of them called the El Clasico between MI and CSK. The other one was like a run fest between Sunrisers Hyderabad and the Rajasthan Royals at Hyderabad. We're going to start with the first game. So here we go. To begin with, I think I want to start with that mythological story. अर्पित वो पता था अतापी और वतापी थे दो भाई, and then there were three. अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड एंड देन ईशान किशन. मतलब मेरे हिसाब से इससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव ट्रायो मैंने नहीं देखी है किसी आईपीएल में. आई थिंक द लास्ट टाइम वी सॉ दैट वाज प्रोबेबली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर व्हेन दे हैड गेल, एबी एंड चीकू जी. आप क्या सोच था भाई ये. में वी हैवंट इवन नेम्ड हेनरिक क्लासन। मतलब ऐड टू दैट इफ यू इमेजिन. सी द टीम शीट, तो इन सब जानवरों में जो सबसे बड़ा जानवर जो तीन नाम आएंगे वो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन का नाम आएगा। एंड बिल्कुल. वी सॉ ईशान किशन सेइंग कि नहीं भाई, जानवर तो मैं भी हूँ। और जख्मी को जैसे कॉन्ट्रैक्ट से मुझे निकाला गया है। हाँ. आई मीन ऑनेस्टली मतलब दिस में साउंड अ लिटिल फनी मतलब, बट लेकिन वो कहते हैं ना कि देवासुर संग्राम हुआ था और अमृत निकला था, अमृत के लिए सब लड़ाई हुई थी. तो कल ऐसा लग रहा था ये सारे उतरे थे कि जो फाइनल में हमारी ओनर काव्या मरान के आंसू टपके हैं ना, उन सब का बदला लिया जाएगा. मतलब इट वाज ऑन अनदर लेवल ऑफ अग्रेसिव बैटिंग. आई मीन दीज गाइस, इट सीम टू मी कि मतलब क्रिकेट बॉल नहीं फुटबॉल दिख रहा था इनको यार, जिस तरीके से इन्होंने मतलब धोया है. और धोना इज लाइक एन अंडरस्टेटमेंट यार. होना इज एन I mean, अंडरस्टेटमेंट। there were nearly 100, close to 100 in the power play. And when you actually get 100, I think any team in the world, I mean, I don't think anyone's more of made more of a stunner stuff than this. कि मतलब उनके कंधे ना गिरे इतने ज्यादा demoralize. मतलब मैं खुद अगर आरआर के उसमें होता तो मैं कहता भाई दिस मैच इज डन एंड डस्टेड. एंड आई थिंक एक होता है कि चलो इतने रन बने तो उसके बाद कुछ कहीं पे रोक ब्रेक ब्रेक लगता नहीं. आई मीन दे जस्ट वंस ईशान किशन केम इन, आई डिडंट लुक टू मी कि भाई मतलब इस आदमी को जरा सा भी वो हुआ कि भाई मैं मतलब बॉम्बे छोड़ के आया, उन्होंने रिटेन नहीं किया. आई मीन ही आई थिंक हैड अ लॉट टू प्रूव एज ही कॉल्ड आउट पर्सनली. एंड आई थिंक ही the celebration said it all. I think he was there to prove a point, and I think his celebration was like top notch. I think well deserved. What a knock. ऑल्सो द फैक्ट दैट a lot of people were not ready to believe that Hyderabad repeat कर सकती है whatever they did last season, scores of 280, 270. राजस्थान का स्टैंड इन कैप्टन रियान पराग was a part of the list of people who thought कि नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता यार। हाँ. कितना आयरॉनिक है, कितना पोएटिक है कि उसी के अगेंस्ट फिर से। यही हुआ. वापस हुआ. हाँ। और एक अजीब चीज ये लगी कि ऐसा लगा ही नहीं कि ये ग्रुप का एक साल का बीच में इंटरनेशनल क्रिकेट हुआ है. ऐसा लगा कि ये लास्ट मैच खेले और उसके बाद मतलब यही टीम कंटिन्यूअसली खेलती गई है. बिकॉज इनके अप्रोच में इनके एक मतलब एक बॉडी लैंग्वेज नहीं बोलते कि वी आर आउट देयर टू प्रूव अ पॉइंट. हम्म। And which is basically that throw whatever it does, be it spin, be it pace, the quicker it comes, the faster it leaves for the stands. And I think that 105 मीटर का छक्का मारा था ना ट्रेविस हेड ने. 5 मीटर का छक्का मारा था। भाई ओ भाई मतलब I have a few questions, and these questions I can ask only you at the moment. uh, Jofra Archer, what's his specialty, man? Like, is हाँ। is he a classic case of someone with a lot of potential, but absolutely zero what you call brio to sort of execute those plans? I think it was some of his bowling seemed like कि मतलब यार मैंने 24 बॉल डालनी है, अब बस मैं किसी तरह डाल के खत्म करूं. ये मतलब हो सकता है मतलब कोई इतना पिटे, लेकिन आप सीनियर खिलाड़ी हो एक तरीके से. आई थिंक हैज इनफ एक्सपीरियंस despite his injuries and whatnot. I think he's had a regular, at least 1 year of regular cricket that he's played. And I think the way he was taken to the cleaners, ये तो मतलब I think he needs a lot of soul searching, or someone needs to sit with him, tell him कि बॉस आपका काम बहुत बेसिक है,
और आप उसको प्लीज ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो. आई मीन लाइक यार बीमर मारी थी अंत में. दैट showed that he was completely like mentally somewhere else, and physically he just wanted to complete the quota. Matlab, I am sure there are a lot of bowlers in the waiting lineup who could have done a far better job than him, given that he has so much of experience and is regarded as one of those key players. जिस पे नहीं कहते बेड रॉक है इनकी बॉलिंग का फाउंडेशन सेट है, और वही ऐसा करे तो भाई आई मतलब थिंक सम. करंट कंडीशंस में ही इज बिन फाउंड आउट, जितना मेरे को समझ आ रहा है थोड़ा बहुत. इफ यू लुक एट द चैंपियंस ट्रॉफी, इफ यू लुक एट द बायलैटरल सीरीज विद इंडिया बिफोर दैट, या उसकी स्ट्रैटेजी ज्यादातर ये रहती है कि आके बस बॉल पटकूं पिच पे, विच इज नॉट वर्किंग आउट. I think he does not have the variations. He was trying out slower balls yesterday from the third over that he bowled, but नहीं हो पाया था. ही then, वाज स्टिल वैक्ड. so I think subcontinent conditions may maybe he is not as effective and not as dangerous as maybe other conditions. I'm sure कि अगर ये IPL ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता तो कहानी कुछ और होती. But I think he needs to go back to the drawing board and try and understand कि यहाँ की pitches पे what is the length you need to bowl at and what is the line you need to bowl, जो मिसिंग लग रहा है अभी शायद. I think I have the biggest gripe with the bowlers would be around the line. हम्म. If you notice, either it was too much onto their body or it was too wide. हम्म. तो या तो वो पुल कर रहे थे या वो कट्स मार रहे थे क्लियरली. एंड लेंथ भी अगर तू देखेगा तो मतलब चलो ड्राइविंग लेंथ इज नॉट अ बैड लेंथ, बट आई थिंक देयर वाज अ आई मीन एक यॉर्कर डालने वाले बॉलर की बहुत मेरे को ऐसी कमी दिखी आरआर के लाइनअप में. इनफैक्ट barely any Yorkers bowled. See, it's a very hard delivery to nail, but in this format, जहाँ पे जिस तरीके का template है SRH का कि we're gonna hit anything, and they are able to hit anything. So I'm not talking about any other team, because I can assure you that this bowling lineup, say against like a Delhi or any other team, will not really concede these many runs. But when it comes to SRH, you got to have a plan A, B, and C. And I think, was there a plan to begin with? I don't know. Maybe with trying to introduce the Sri Lankan spinner Tikshana, इच्छा. if I'm not wrong. हम्म. Right. He also like sort of erred with his line. I think That whole bringing him on to get Travis Head out made sense. He got Abhishek Sharma out in the process. But the fact that उसको bowling करवाई गई against Ishan Kishan, that too hmm, play में, I think that was also plain poor captaincy. And the fact that captaincy. and the fact that संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे जैसे bowlers are able to vary their line and length, bowl slower deliveries, medium pace deliveries. They do not have express pace. They were just being street smart yesterday. And the Yeah. fact that they returned much better figures than Jofra Archer, it's मतलब he needs to do a lot of soul searching. And yeah, and above all, like I think they need a bowling ka leader. RR. I think last season they had Ashwin and Chahal both, if I'm not wrong. They had Bolt as well. And plus they had bowled. So that's 12 solid overs in T20 that they relied on. In fact, if you remember, I think it was a game against Acer. There was one game. No, I'm actually like missing something. मतलब मेरे को कुछ ध्यान आया था, but it just like flew away. Anyhow, तो यार bowling तो is something. 12 overs का replacement is rather hard, man. And that to like Sandeep Sharma, ठीक है. कल तो सब पिटे, कल तो पैट कमिंस भी पिटा वहां से. So see, a target of 230, 240 would have been on. जिस Target of टाइप की 230 ट्रैक थी, was. वो वो प्रॉब्लम वहां नहीं था. लेकिन आप कुछ कोर चीजें या कुछ अलग ट्राई करो. जैसे यार यॉर्कर्स एकदम डिमिनिश हो गए. आई गेट इट, बहुत लोग आजकल मार देते हैं, बट आई स्टिल फील कि उस लाइन पे ना, उस अटैकिंग लाइन पे यू मिस आई हिट वाला फंडा इज वेरी वेरी रिवॉर्डिंग इन दैट रिगार्ड. अगर हल्का सा भी मिस हो जाए या कुछ हो जाए तो आप सीधा डंडा निकाल रहे हो. तो ये तो हो नहीं पाया. और आई थिंक ट्रैविस हेड के साथ तो यार मेरे को यही लगता है कि some of his dismissals have always been around that four stump line, if you notice. Either he gets an inside edge, drags it onto the stump, or gets a nick.
बट हाँ, वो इतना फुल बॉल को ऐसा बोलते हैं ना कि अभी कि फुल बॉल नहीं खेल पाता है, फुल बॉल नहीं खेल पाता है। मिचेल हाँ, गॉट हिम आउट मिचेल दैट। स्टार्क ने उसको वैसे ही एक्सप्लॉइट किया था. सो दे नीड टू लाइक प्लान अगेंस्ट. I think all IPL teams need to plan against this set because yeah, forget these three. Like you mentioned, they've got Henrik Klassen, and he was absolutely pissed when he got out. It seemed to him that he कहते नहीं कि मेरी रहेंगे और मारता मैं अभी. हम्म। And they were very clear with that intent कि today they were trying to get to that 300 mark as close to that as possible. हर्षा भोगले से पूछा गया था कि do you think 300 will be scored? हम्म। And I think maybe that man has so much of cricketing knowledge and he's like way ahead of the curve and things. He did say that no, it's not possible हम्म। to belt a. But कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि given the Hyderabadi that he is, that he knows that if at present any team which can do this, it's only Hyderabad, and he doesn't want to put that unnecessary thing कि हाँ 300 बनेगा और वो SRH बनाएगी या कोई और टीम में भी for that matter. हम्म। Belter of a track, do you think RR took the right call of uh, bowling? नहीं 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 नहीं, आई थिंक ये तो नहीं ना. पिछले आईपीएल में ही एस्टेब्लिश हो गया था, जहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आईपीएल पीपल वर लाइक कि भाई इन जानवरों को पहली बैटिंग मत दो। इट डज नॉट मैटर व्हाट द पिच इज, ड्यू आएगी आएगी, लेकिन सेकंड बैटिंग मत कराओ उनसे, उनको फर्स्ट बैटिंग मत दो। Or by the way, one call out, guys. When we refer to them as जानवर, this is not coming from a point of disrespect. They are absolute beasts. They दे are, I mean, human beast level. तो यहाँ पे बहुत इज्जत से उनको ये इस शब्द से संबोधित किया जा रहा है. तो इसे प्लीज अन्यथा ना लें. Just putting out a disclaimer, we are very relatively a young channel. We do not want to get into any sort of controversies. Having said that, we love to skirt around that border. Coming along, captaincy, big question mark. Do you think Riyan Parag is a little young to be burdened with that uh, at पता नहीं present? यार, Like, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने पोस्ट मैच में आई थिंक बोला, व्हेन आस्क्ड अबाउट दिस होल hmm, बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट डिबैकल, ही सेड कि इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन। मतलब उसने बहुत प्यार से मैनेजमेंट को, सरकार दिया, मे बी संजू सैमसन सरकार दिया. अंडर द बस, है ना। तो आई Hmm, थिंक इट वुड बी फेयर टू अज्यूम कि अगर अगले दो मैच में वो आरआर अच्छा करती है, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ hmm. हिज डिसीजंस एंड इट इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज कैप्टनसी। आई जस्ट वांट एवरीवन टू कीप दिस इन माइंड कि भाई, इफ थिंग्स गो वेल, इट इज ऑल्सो नॉट बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि वेरी Yeah, क्लियरली ही रिफ्यूज टू अज्यूम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ डिसीजन दैट ही टुक आउट देयर ऑन द फील्ड। yeah. तो मतलब मेरे को बहुत ज्यादा, आई डोंट नो, आई थिंक कि मे बी रियान पराग वाज आल्सो नॉट द बेस्ट चॉइस टू अपॉइंट एज अ स्टैंड इन कैप्टन। I would have preferred Jurel. जुरैल हो सकता था, इट कुड हैव बीन यशस्वी फॉर दैट मैटर, ही इज बीन डूइंग वेल फॉर 3 years नाउ फॉर दैट फ्रेंचाइजी। कुड हैव बीन एनीवन बट पराग, हु ओनली एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ प्रॉपर्ली लास्ट ईयर। उसके That's पहले a तो valid वो point. उसको उसके पहले तो वो बेसिकली ट्रोल्स का ही शिकार था। लास्ट ईयर भी ट्रोल हुआ, बट कुछ और रीजन से हुआ, एटलीस्ट खेलने की वजह से नहीं हुआ। बट बट गिविंग हिम द कैप्टनसी व्हेन ही इज जस्ट 1 year into stabilizing himself in the team, I think Hmm. not something. Maybe if you give him the benefit of the doubt, maybe it was a collective decision. But Could then, be. but then you should appoint someone who is able to make individual decisions and not rely on collective decisions, who has that pull or who has that say in the team. One or second. Secondly, I think a lot of the bias could have been come from the fact that probably he's the only decent recognized player of late from the Assam side, right? So maybe they're like taking that into account that रणजी वंजी उनके लिए खेलता है, उसका एक bias रहा होगा. Maybe. Ki maybe he would be calling shots in that team. I'm not really sure if he captains them. Most likely would be captaining, given that he's the name, the prominent name that comes from Assam. Let's see, but they need to. I think he also see there are 5 minute मिलते हैं इनको 20 ओवर में strategic timeouts, and I'm sure कि where notes are passed, things are exchanged. There would have been certain feedbacks and all. अब I think it's very easy. I mean हाँ मतलब कैप्टन जब आप होते हो तो ब्लेम और ग्लोरी दोनों मिलती है बराबर.
So I think, but yeah, nothing to say that it's horrible here. Like the bowling, Yeah, they simply were in a habit of getting wickets in the power play through Trent Bolt and all, and then Yuzvendra Chahal and Ravi Ashwin were like dependable spin bowlers, 8 overs of decent bowling. So they're definitely missing that. They have missed a trick or two probably in the retention. I feel. I think how can you let go of Yuzvendra Chahal is the most highest wicket taker, no, in IPL. who did they retain? Sanju Samson, Yashasvi Jaiswal, two very obvious choices. Riyan Parag is there. Retained Riyan Parag, and then they retained Sandeep, Dhruv no, Jurel. no, Dhruv Jurel, yeah, yeah. Jurel. हम्म. I mean, हाँ, किसके जगह लेकर आते चहल को? yeah, that's आई थिंक fair enough. आरटीएम शायद यूज कर सकते थे अगर किसी एक को नहीं रिटेन करते तो. पता नहीं. Jofra was always in RR, right? जोफ्रा नहीं नहीं एमआई में था ना, कि लास्ट ईयर आरआर में भी. Last se- last year, maybe I'm just muddled up there. Jofra Archer, उसने वो किया I था see. कि एमआई के लिए 2 सीजन खेलने वाला था, बट इंजरी के कारण खेला नहीं था. Correct. फिर इस साल आरआर में आ गया. Well, let's just say that, yeah, भाई हाँ. ने रिकॉर्ड बना दिया. It's the most expensive returns हाँ, ने सही भी है. that to come. मतलब मेरे हिसाब से कोई भी ये सब रिकॉर्ड्स किसी डोमेस्टिक प्लेयर के पास तो नहीं होने चाहिए. मोहित I think शर्मा. he did Mohit Sharma a huge favor. हाँ. Actually, after that, oh, there's only Luke Wood. I think that's his compatriot from England again. हाँ. Oh man, belted, yaar, belted. But I think positive light, Dhruv Jurel, ध्रुव. Aniket Verma, someone to शुभम look forward to. शेटमायर, शुभम दुबे, एवरीवन. आई थिंक Yeah, फ्रॉम यशस्वी एंड पराग, ऑलमोst everyone batted well. do you On think Yashashvi is under some sort of a pressure in this format? I don't think he is under pressure per se in this format, but I think Hmm. yesterday कल वो टारगेट देख के थोड़ा वो he got ruffled up. He वो the way he swinged his bat पहली बॉल पे, it was Hmm. very evident कि that target got to him yesterday. Yeah, that wild swing of the first ball, इतना छूटा था बैट और बॉल में, शमी का हाँ. बॉल जो बाहर निकला था. हाँ. And I think SRH have been very smart with their purchases. Yeah, you got Ishan Kishan, you got Mohammad Shami. Got Mohammad Shami. Mohammad Shami, Pat Cummins leading a pace attack. That's next level, भाई. सिमरजीत जो आ गया है, जो हाँ, जिसने कल मैच I, निकाल दिया एक बेसिकली. I am impressed. It's one of those guys I would want to look forward. आई थिंक And मिड 140s बोल कर रहा था ब्रो. मतलब इट इज नॉट लाइक कि मीडियम पेसर है, मतलब प्रॉपर पेस. हाँ, चलो बढ़िया. बहुत जमाने बाद पंजाब से तगड़ा पेसर दिखे. दिखेगा 2 साल बाद अर्शदीप एंड सिमरजीत Killing it ना. किलिंग इट. I'm trying to recollect. There was a time when Saran Deep and Harbhajan used to play together. हाँ, बट आई थिंक ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि जब दो पेसर्स पंजाब से हों. I'm trying to recollect. VRV सिंह तेरे को याद है एक प्लेयर था यार, VRV सिंह विक्रम राजवीर सिंह. दो सरदार हों पेस अटैक में. यार मैं तो यही याद करना चाह रहा हूँ कि नहीं मेरे ख्याल मैंने तो नहीं देखा यार इन नहीं माय देखा. लाइफ टाइम. नहीं 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 नहीं. एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मैंने दो सरदार जी मैंने वही देखे थे यार. सरनदीप एंड हरभजन वन टाइम इन हम्म. वेस्ट इंडीज 2002 वाले टूर पे द्रविड़ के साथ पार्टनरशिप थी यार. नाइन्थ विकेट के लिए अच्छी खासी. ये याद नहीं है मुझे. हम्म. हाँ, तो वो था. But interestingly, where do you think the chase went wrong for Rajasthan? आई थिंक रॉन्ग तो सबसे पहले द थिंग दैट वेंट रॉन्ग वाज जो सिमरजीत का एक ओवर था, हाँ. उसमें थोड़ी मिट्टी पुलीत हो गई. बट हम्म. ओवर 7 to 11 12, द वे हम्म. सैमसन एंड जुरेल बैटेड,
थोड़ा ज्यादा हम्म, कंसोलिडेट करने लग गए थे वो. दे वर हिटिंग शॉट्स, दे वर प्लेइंग देयर शॉट्स, बट दे वर लॉट ऑफ डॉट बॉल्स. इट सीम्ड at that point of time that they were not chasing the win. They were just हम्म, trying to like calm themselves down, थोड़ा consolidate करना था शायद, और wickets नहीं देने थे. But हाँ. at the time it was over 12, it seemed very हम्म. clear कि अब जीत तो नहीं पाएंगे. I mean, in my defense, I would say, not in my defense, rather, if I try to be the devil's advocate यहाँ पे, यार ऐसे वाले चेजेस जो मेरे को याद आते हैं, अगर कभी किसी ने किए हैं ह्यूमंगस चेजेस, तो वो फिर वो 6 या 7 विकेट से जीतते हैं मैच. तो मेरे को ये लगता है कि जुरेल एंड संजू सैमसन वुड हैव थॉट कि इवन इफ सॉर्ट ऑफ लाइक एक दो डॉट बॉल अभी भी जाए, बट वी ट्राई टू फिनिश द मैच टिल मैच ओवर 20. हम्म. और वो सही बैठा नहीं, बिकॉज वो एक्चुअली सेट सही जा रहा था एक टाइम पे. बिकॉज जब जुरेल व्हेन ही कट लूज भाई, अगेन क्लीन हिटिंग यार, एक दो छक्के उसके बहुत प्यारे थे. एंड आई ऑलवेज एडमायर्ड सिक्सेस व्हिच आर वेल टाइम्ड, नॉट हम्म. लाइक ब्लजंड. हम्म. तो वो बड़ा प्यारा लगा मेरे को देख के. और लगा मेरे को कहीं ना कहीं था कि यार कम ऑन, लेट्स लेट्स गेट दिस एज क्लोज एज पॉसिबल. हम्म. बट फिर आई थिंक सक्सेसिव ओवर्स में आई थिंक ये दोनों आउट हो गए. एंड देन उसके बाद फिर हिटमैन इन लोगों ने भी मारा. बट अब यार व्हेन मतलब यू लाइक लेफ्ट टू तो चेज मत तो चेज, हाँ. मतलब अगर 70 वो ऑफ टू दोनों आउट ओवर्स, नहीं भी होते, अगर वो दोनों आउट नहीं भी होते तो 160 ऑफ 8 ओवर्स इज, मतलब नहीं, टू ज्यादा मच. है, बहुत ज्यादा है. बहुत ज्यादा है. मतलब दे हैड 70 ऑफ 12, यानी हाँ. उसमें 11 छक्के एक चौका. मैथ बिठाए अगर, तो ये तो मतलब दिस इज समथिंग यू बोथ बोथ ऑफ अस कुड हैव डिफेंडेड कि भाई मतलब ठीक है, इतना ही है ना. कॉन्फिडेंस ज्यादा कि यहाँ कर लेंगे, इतना नहीं खाएंगे, सही बात है. मंकड़ कर देंगे का. तो बढ़िया था ब्रो. आई मीन व्हाट अ स्टार्ट टू द फर्स्ट वीकेंड. आई मीन हाँ. रन फेस्ट यार. आई मीन बेस्ट. एंड ऐसे उसका कौन करता है यार. कॉन्ट्राडिक्टरी मैच था शाम वाला, MI CSK. अरे उसको एल क्लासिको बुलाते हैं. एंड आई थिंक यू नो क्रिकेट लव्स टू एप फ्रॉम फुटबॉल राइट फ्रॉम पुटिंग नंबर्स. वाना भी एल तो क्लासिक. फिर हाँ, मतलब फिर उसके बाद ये होने लगा ना कि क्रेस्ट के ऊपर आपके फिर स्टार्स लगने लगे जैसे फुटबॉल में हाँ. होता था. ठीक है. और प्लीज एल क्लासिको की अलग हिस्ट्री है. और कुछ बढ़िया नाम लेके आते हैं यार, मतलब हाँ भाई, कितना आई वुड हैव. करते थे ये. मतलब कॉपी कर रहे हो तो वो तो ठीक से कर लो. बिल्कुल यार, और प्लीज अपना कुछ बनाइए ना आपसे. बट ठीक है, अब जिसको जैसा लगे. हाँ. मेरा पहला सवाल है, और ये पहला सवाल as we move on to the game in the evening between MI and CSK. ये मैच एनालिसिस अलग करते हैं. एक चीज बता दे यार, was that a genuine run out or was that a discussion mid over between Rachin Ravindra and Jadeja कि देख भाई काम हो गया है. भाई कोई भी आउट हो जाए, कैसे भी आउट हो जाए चलेगा. जेन्युइन, थाला शुड कम. जेन्युइन तो नहीं होता, लेकिन थाला ने 1000 पेड़ लगवा दिए. ये दैट ट्रू दैट. भाई मतलब तू समझ रहा है, जडेजा नहीं विदाउट कर पाता. कंट्रीब्यूटिंग टू द स्कोर बोर्ड इज कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी मैन. लाइक आई मीन इस हाँ, AQI बढ़ा हुआ है, ऐसी बातें चल रही हैं. मतलब लोग बोला है. तो गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं. अब गवर्नमेंट ऑब्वियसली ये सब नहीं कर पाएगी ना, ये सब हमारे हाथ में है. थाला ने बोला पेड़ मैं लगाऊंगा. एक स्टंपिंग थी, अब चलेंगी 20-30 दिन, रीलें कटेंगी अरे उनकी. लेकिन यार आई वुड से मैन दैट वाज क्विक. दैट वाज इट वॉज क्विक, रियली क्विक. नो डाउट. भाई वो स्टंपिंग तो बढ़िया थी. वो 1 साल लगता है यही करता है बंद कमरे में, एक वो विकेट भी बताते नहीं लिया. है. हाँ, धोनी ने एक विकेट भी हाँ. लिया. अ, अ, मतलब स्टैट्स वाइज वो नेथन एलिस के नाम पे जाएगा, अच्छा. लेकिन सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है कि वो धोनी ने लिया है विकेट, वो PRS दिलवा के. तो खैर आई थिंक IPL since it's like a BCCI's own right, they can actually rename it. और अगर ना भी कोई लोड हो तो भाई पैसा बहुत है, BCCI पैटेंट करा सकती है. बोले भाई आज से DRS नहीं होगा, ये धोनी रिव्यू सिस्टम है, क्यों नहीं भाई, ऑनररी हो सकता है.
बिल्कुल हो आई मीन सकता हाल ऐसा है कि अंपायर ऋतुराज की तरफ देखता नहीं है, ऐसा उसमें देखता धोनी भाई कर ले, और कहते हैं हाँ भाई कर लो कर लो कर लो कर लो। तो ऋतुराज ने भी बोला होगा "यार, क्या माही भाई आप बुलवाओगे मेरे को, टाइम वेस्ट होगा, करो जल्दी करो"। तो वो वहां पे बेचारा बाउंड्री पे खड़ा होकर ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है, दिक- तो वो देख ही अ, नहीं रहा है कोई उसको। अरे मजे की बात बताता हूँ तेरे को। इन लोग का हीरो कैम कैप्टन कैम होता है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ दोनों को, धोनी पे ही रहता है। वो कहते हैं भाई कौन है ऋतुराज भाई, है तू रहे भाई। वो ये क्लासिक केस हो रखा है उसका, गैंग्स ऑफ वसेपुर में नहीं था कि हम्म। जो जेपी यादव थी, क्या नाम था उसका, जेपी सिंह जो बेटा हाँ। होता रामाधीर का। तो उसका जब नरेशन नहीं हो रहा था कि जेपी जानता था कि उसकी दिक्कत उसका खुद का बाप है। तो वही है यहाँ पे सक्सेशन गेम, मतलब जब तक धोनी भाई हटते नहीं तब तक ऋतुराज को कोई मानता नहीं है, देख। भाई ऑन हटेंगे, पेपर एक चीज लग रहा है मेरे ख्याल से यार, तीन आई थिंक सकते हैं। वेल, आई मीन फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल फ्रॉम हिज कीपिंग एटलीस्ट, भाई मतलब सच बोलूं मैं तो भाई इज स्टिल फिट एंड ऑल यार, उस पे तो आई कांट क्वेश्चन हिम। Whereas I feel that, अब ये मेरा पर्सनल वो है कि भाई अगर खेल सकता है तो खेले, लेकिन हाँ भाई इनका रोल बड़ा क्लियर डिफाइन होना चाहिए फिर। सही बात है। करेक्ट। और टीम तो करती है, जो मैनेजमेंट है, जो लोग खरीदते हैं, आई थिंक प्रोबेबली इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैंस ऑल्सो कि इफ ही फेल्स, एंड ही विल फेल, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज when you have zero cricket in between the two events, and I'm not saying that guy cannot hit, he still whacks the ball out of the park. You got to take into account his age, his reflexes are still there, but that's keeping. Batting is a different ball game altogether, and I think we did see that last season when I think it was against which team that exposed him. बोल्ड मारा था ना उसको, पंजाब, हर्षल पटेल पंजाब में था ना। हर्षल पटेल। सो देयर माइट बी अ चांस कि कभी अगर पहले आना पड़ा तो आई डोंट नो मैन, बिकॉज टुक टुक वाला गेम कर लेंगे, लेकिन इफ इट्स अ गेम वेयर ही हैज टू हिट from the word go, which he can and he will, but it may not always pan out. He's actually signed up for this role ना, कि मेरा काम ही है 6 बॉल 10 बॉल खेलना और उसमें जितना आना है, तो ये हर बार ना चले शायद। नहीं सही, चलो तो बढ़िया। उस टाइम पे आई थिंक द फैंस would have to back him up because see, you all want him, and that is one of the reasons I think he factors in when he chooses to play. I feel he has a strong backing. He wants to win a IPL and then sign it off in style, maybe. So if his own fans then, because you remember last year one gentleman from Chennai, he I think playoffs के कोई मैच चेन्नई में हुए थे, and उन्होंने कहा था कि since it's some other team playing this time, the focus is on the cricket match. It was not at Dhoni. And if you noticed yesterday, he did wait patiently for Ravindra Jadeja to actually like leave, and then he stepped in. हाँ, वो तो क्योंकि Because कंफ्यूजन था ना कि अच्छा जडेजा। हाँ करेक्ट, मेरे को लगा कि यार ये आजकल आजकल हो क्या अरे रखा ब्रो, है ना आपकी कि खाला को क्रेडिट दे रहे हो जहाँ नहीं देना है। भाई आई गॉट हुडविंक्ड ऑनेस्टली। हाँ नहीं नहीं, हाँ देयर वाज अ मर्लिंग, मेरे को पहले लगा, हाँ करेक्ट करेक्ट, मेरे को पहले लग रहा था कि इज एक्चुअली वेटिंग ताकि वो आए तो फिर मैं जाऊं, अरे ताकि कितना रोता होगा ना ब्रो। बोले 15 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ ताकि आउट होना पड़े, कि 2 बॉल मिल जाए ताला को। हे भगवान। तो मैं वही कर रहा था। हाँ वैसे कमिंग बैक टू द गेम नाउ, या आई थिंक पांड्या आई एंड बी बैक। बुमराह मिस्ड हेavily. कोई गेट पे आया, 1 मिनट। Well, while my friend is going to, fetch the door, how about a quick trivia question? Who at present has the maximum number of ducks in IPL? Please comment in your answers and we'll let you know if you got it right or wrong. Thank you. Hey, welcome back, Arpit. I mean, it wasn't much of a match to talk about. It was a standard drill. I think Chennai stuck to the whole point that spinners are going to be a key, and I think exceptional bowling there by Noor.
both I Noor mean, and वो Hmm. अरे भाई वो विकेट जो उसकी जो उसने एकदम स्टंप के पीछे से लाइक स्वीप करा के जो बोल्ड निकाला, मंदिर को। भाई क्या बॉल थी वो. आई मीन this tournament is 3 matches old, and I just feel I think that was so far is the best ball that I've seen. Yes, I think Mumbai missed. They're missing Pandya and Bumrah heavily. they are. Yes, Uh, आई थिंक और ये क्या. बाहर जाएगा, पांड्या अंदर आएगा स्क्वाड में। Hmm. Hmm. And I think Surya Kumar Yadav is like off color. It's been like it's there when he plays for the Indian cricket team. Also, he's not been firing off late. Can happen to the best. He's been very consistent, so I'm not really alarmed there. But yeah, it was a very lackluster inning. I mean, I it reminded me of that struggle that he had to go through in that 2023 World Cup final, where couldn't just do anything right about it. वो चीज लगा था. I think CSK they plan it really well. I think, and the surfaces also are sort of like set up in a manner where they back what their strength is. आई You have थिंक anything to add? कल कल ऐसा हुआ। आई थिंक फॉर द पास्ट 2-3 IPLs दैट हैज नॉट बीन हैपनिंग, एंड Hmm. CSK मैनेजमेंट्स बिगेस्ट कंप्लेंट कि भाई दे दो एक ऐसा ट्रैक जहां से धूल उड़े, क्यों तुम हाँ. बेस्ट वाली पिचेस बना रहे हो। But बट देखो लगता I think it's more also of their personnel getting right. Spinners. नो, did did get it right. आई थिंक मुंबई की बैटिंग, if they hadn't lost, if Khalil hadn't done the damage that he did, We'll come to that afterwards. You complete your point. uh, I have a few things to say about him. या भाई अगर खलील ने वो नहीं किया होता जो उसने किया, तो Hmm. मुंबई would have scored a few more runs. I think Hmm. even Mumbai's spinners did get it right. वुथुर एंड किसने बॉल कराई, और नमनधीर ने एक दो ओवर निकाले, सैंटनर ने ओवर निकाले। दे वर नॉट बैड ओवर्स, बट द फैक्ट दैट खलील ने जो डैमेज किया शुरुआत में, उसके बाद मुंबई के बैटर्स कैचअप ही खेलते रह गए। थिंक दैट वाज द Exactly. डिफरेंस इन द मैच यस्टरडे। And do you think that Vignesh Puthur is one to look out for? आई थिंक फॉर द टाइमिंग यस, एटलीस्ट दिस सीजन, बिकॉज द अदर टीम्स हैव गॉट टू sort of figure him out. It'll take time. He's going to get wickets. I feel what I really saw and that just like warmed my heart was to know the fact that by this guy has big balls. Hmm. He did not shy away going that उसका debut था ये पहला मैच था and you tossing it up Hmm. and उसका मिला उसको फल. I think wickets उसने उसी ने मैच में थोड़ा एक रोमांच डाल दिया था. Maybe you know what the bookies would have made a killing out of it कि यहाँ से पलट सकता है. But anyway, sorry, I'm digressing here. But no, man, like last time a spinner made me feel this good was probably Ravi Bishnoi. Hmm. As Bishnoi for the will be in action today. I think yeah, man, I know. last year उसका IPL बहुत underwhelming था. Did not give the Yeah, best. correct. He has to, if he wants to remain in contention for the Indian team. Exact, Yeah. exactly. And आज तो मेरी टीम का मैच है भाई, दिल्ली. और मेरे को यही यही शिकायत है खलील से कि क्यों भाई हमारे लिए भी ऐसा कर देते यार. अरे किया तो उसने क्या, 17 या 19 विकेट थे उसके पिछले सीजन। यार लेकिन एट व्हाट कॉस्ट. ना, दैट इज ट्रू। एट व्हाट कॉस्ट. एंड आई थिंक प्रोबेबली यार ये लोग कोई तो मतलब नहीं कहते घुट्टी मिलती है सीएसके में लोगों को which is going to be a secret forever. I mean, like, I don't know, नहीं है ना but वो, माही भाई कुछ फ्रीडम बोल के कुछ होता है वो देते हैं। अरे यार चुप हो जाता हूँ। नहीं मेरे ख्याल है नहीं यार. आई थिंक माही भाई probably reads the game काफी well. I mean, given as most successful captain in terms of accomplishments and stats also, like not
I mean, if I say otherwise, then maybe I do not understand cricket. But having said that, man, there's something which is very calming about these guys. यार कितने सारे players हैं जो they go to the Chennai camp and should we probably lobby around having Stephen Fleming as a I coach? was about to say this. Ki on a serious note, I think uh, Fleming has a big role to play in this Yeah, team, because he's been giving people. consistent over 18 seasons both as a player and then coaching Yeah, staff. yeah, So that's something to look into, in my opinion. yeah. But I think for now, Gigi is seems to be doing a good job. Yeah, He's but got white ball figured, no worries there. yeah. ठीक है, I Well, think. that's the video, guys. Yeah, We're gonna wrap it up here and do watch out for more videos coming up. There's gonna be one more after this game concludes, which is between DC and LSG. And let's see how Rishabh Pant fares against his former team. क्या बोलूं मैं मतलब कहते नहीं घर छोड़ के निकला है लड़का the boy leaves to become a man in the world of cricket. Let's see how it pans out. Wishing him all the very best. See you guys. Thank you so much.